कॉन्सेप्ट वाइज पॉइंट्स बना के नोट कीजिए. तो as per NCERT, our chapter's name is atoms and molecules. मोटा मोटा इस चैप्टर में we are going to learn some basic about chemical combination laws. Okay, chemical combination, और इसे पिछले जमाने में चले जाएंगे 17th century laws, law of constant proportion and law of conservation of mass. इसके बाद we gonna talk little bit about atom. तो जब हम atom की बात करेंगे, Dalton's half will also come in between. Okay, Dalton's model and his postulates, these will come after atom. जब बात करेंगे, so we'll also talk something about symbol. ठीक है? Then if we talk about molecule, then we will be also talking about chemical formula. Okay, इसके बारे में बात करेंगे. और atoms में हम क्या बात करेंगे? We are going to talk about atomic mass. ठीक है, ये एक अच्छा पोर्शन है, atomic mass, relative atomic mass. और यहाँ पे atomic mass वगैरह बात करना है तो we should also talk a little bit about what is atomic number, what is mass number. ये सबके ऊपर ही चैप्टर है. These are where questions can be asked to you and all. Okay, now since we have also studied chapter number 4, now we will not study this chapter with the ignorance factor that we don't know what is electron, we don't know what is proton. क्योंकि हमने आगे का पिक्चर भी देख लिया है, दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे ताकि अभी knowledge gets more better reinforced. Right? See, in this chapter you are studying about atoms and molecules, but when you go to the next chapter, you go back to 18th century when you were ignorant about the atom. अब लेकिन हम वैसे नहीं पढ़ेंगे. We're going to study it with complete knowledge of the atom, whatever we know so far. ठीक है? These are all the broad things that this chapter covers about. Then you can study, I don't know, when maybe in this chapter or later, isotopes क्या है, all those. I think that's in the other chapter. But over this, it will be hovering. And we're going to have some numericals also. And our numericals will be based on, यहाँ पे numerical भी होगा. है ना? Some bit of numerical will be out here. Are we ready? Yes, good. चाहिए. I will not touch these at all at first. My first thing will be that as a student, now you are in क्या? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ. Okay, as a student who is in grade 9, okay, who is in grade 9, first of all, ask yourself, is your concept about atom, molecule, okay, element and compound, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं ये सब कुछ. पहले तो the cloud जो यहाँ पे रहता है ना, थोड़ा सा cloud means the haziness that you have, that has to be cleared. ठीक है, this has to be cleared. And when we also talk about this chapter, I'll also give you certain amounts of cations, anions, polyatomic ions and all. Whether it is in syllabus or not, that's not our lookout. We need to know them. Otherwise, you'll be bleeding and limping badly in grade 11. Because grade 11, what has happened in grade 9 is that after COVID, they have done a lot of cut-pit. But they did not do that in 11. The first chapter of 11 is some basic concepts of chemistry. And people fail in that chapter only, some basic concepts. Intensive numericals will be there, intensive. And if you join any coaching institute, they will make you do that chapter. You don't know an iota about things like mole, molar mass, molar concentration. These were earlier there in 9th. अभी हटा दिया है. तो इसलिए यहाँ जो भी पढ़ेंगे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए. बाकी CBSE में नंबर आ जाएगा. That's not it. But your concept should be clear. Number 1. Also, you should know about some things about elements and all. I would talk about. I start my discussion with something called oxygen. Okay, oxygen. हम वो इंसान है, ठीक है, वी आर इंसान, नाक में भी ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है. ऑक्सीजन एक एलिमेंट है. ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट. कैसा एलिमेंट है? नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल. रिप्रेजेंटेड बाय द केमिक सिंबल O. O. पीरियोडिक टेबल में भी हमें ऑक्सीजन दिखेगा O. दिस इज O. अंडरस्टूड? Periodic table represents all elements. यहाँ से क्लियर होते जाइए. Periodic table represents all elements. Each element being represented by one atom. United Nations है ये. हर कंट्री का एक आदमी आके बैठ रहा है और इस आदमी को हम क्या बोलते हैं? This is Finland. हम तो उसका नाम भी नहीं जानते. ये देखो देखो फिनलैंड क्या बोल रहा है. See, listen what Netherlands is saying. It's not Netherlands. That man is saying, but that man or that lady represents the entire Netherlands community. Are you understanding? He is empowered. So the periodic table is representing all single atom.
पीरियोडिक टेबल में जो आप देखते हैं, दिस इज ऑक्सीजन, एंड राइट नाउ आई एम शोइंग वन एटम ऑफ ऑक्सीजन whose symbol is O. Have you understood? This is representing the element oxygen. हम नाक में लेकिन इसको नहीं सूंघ रहे हैं. What we are inhaling is something called O2. O2 means, O2 का मतलब है two atoms of oxygen combining together to give one molecule. बच्चा ये एटम है, ये भी एटम है, एटम एटम मिलके बना क्या? मॉलिक्यूल. ये भी एलिमेंट का ही रूप है, ये तो एलिमेंट होएगा ही, और ये कंपाउंड नहीं है, ये भी एलिमेंट है. अब नया चीज सीखने को मिला. एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एटॉमिक फॉर्म ऑल्सो, एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑल्सो. दिस इज समथिंग विच यू आर सीइंग इन एटॉमिक फॉर्म इज काल्पनिक. ये आपने कभी देखा ही नहीं. Nobody has seen atomic oxygen. What you see is molecular oxygen. ठीक है? That one we are breathing. Then जैसे हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर के ऊपर एक और मॉलिक्यूल है, that is called ozone. Ozone is also atomic form, but in molecular state. Have we understood this? Okay. So atom and atom combine to form molecule. जरा इसको पिक्टोरियली समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है? मान लो ऑक्सीजन का एक एटम ग्रीन पिंक कलर में है, एक और एटम पिंक कलर में है. ठीक है? ये कंबाइन होते हैं. कैसे कंबाइन हो रहे हैं? दे आर केमिकली कंबाइनिंग राइट नाउ. ओके, दे आर कंबाइनिंग. कंबाइन करने के बाद दे आर फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल. अब आई एम शोइंग द मॉलिक्यूल इन ग्रीन कलर. सी, द मॉलिक्यूल इज इन ग्रीन कलर. इस मॉलिक्यूल के अंदर देयर आर टू ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है? ये एटम है, ये भी एटम है. ये अंदर जो है एटम है, एटम है. बाहर वाला क्या है? मॉलिक्यूल है. मार्बल देखें आप, मार्बल के अंदर बहुत सारी चीजें रहते हैं ना, वैसा है. अगर आप उसमें बोलो मेरे को ना वो अंदर वाला कलर चाहिए, कैन एनीबॉडी गिव यू? नो. ऑल आई कैन हैंड यू इज द मार्बल. व्हेन यू आर ब्रिंगिंग मॉलिक्यूल, दो यू आर सीइंग दीस टू, यू कांट segregate them out. So this is a chemical combination. Atom वही है, this is in molecular state. Is this clear? So similarly, if we say, let's say I take a compound which is say sulfuric acid. ये सब मैं लिख रहा हूं, आप लिखते जाइए. सल्फ्यूरिक एसिड, नए नए चीज सीख रहे हैं आप. इसको हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है? सल्फ्यूरिक एसिड. ये क्या है बेटा? ये एक कंपाउंड है. दिस इज अ कंपाउंड. हाउ आर यू रिप्रेजेंटिंग? अब ये कंपाउंड भी तो कोई देश ही समझ लो, इज सम कंट्री. इट आल्सो शुड हैव वन रिप्रेजेंटेटिव इन ईच UN. Whether we don't give compounds any space out here. Why don't we give? Because it can be infinite big table हो जाएगा. So many combinations can be possible. Compounds को हम कोई representation नहीं देता ऐसे बोर्ड की तरह. But this compound also should have one representative identity ना. That representative identity is one molecule. One molecule of sulfuric acid. इसमें क्या क्या है? इसमें है दो atoms of hydrogen, और क्या है? एक atom of sulfur, और है 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड टुगेदर टू गिव यू वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ध्यान रहे, इस बार आप कंपाउंड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट कर रहे हो. तो मॉलिक्यूल तो भाई साहब बहुत डेंजरस चीज निकला. मॉलिक्यूल कैन रिप्रेजेंट अ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल कैन आल्सो रिप्रेजेंट एन एलिमेंट. दैट मींस all molecules need not be compounds, but all compounds are definitely molecule. अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर कैन ए कंपाउंड बी एन एलिमेंट? खिड़की खोल के कूद जाओ. एक कंपाउंड कैसे एलिमेंट बन सकता है? कंपाउंड जब बनता है देन यू शुड हैव एटलीस्ट 2 or more केमिकली कंबाइंड. उसके बारे में बात करेंगे. कंपाउंड कैन नेवर बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एटम. Never. All compounds are represented by molecules, whereas all elements need not be represented only by atoms. They can also be represented in molecular form. Nitrogen as an atom, N, but the nitrogen that you can feel in air is N2. Hydrogen, H as an atom, but the gas of hydrogen that you see is H2. Sulfur, S8. Chlorine, Cl2.
ब्रोमीन Br2, समझ में आया अभी? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो एनी ऑल दिस धीरे धीरे आप ये भी इन दिस रिवीजन चैप्टर ऑल्सो मेक अ पॉइंट टू लर्न न्यू कंपाउंड्स. यू हैव टू, अदरवाइज इन 10th यू विल बी बिकमिंग अ डम्बो. सर सब कुछ आपको एलियन लग रहा है, अभी से जानना सीखो. There's many people watch only a movie and hear the song. Many people hear the song and also say, ये ना अरिजीत ने गाया है, ये इसने गाया है, ये इसने गाया है. The more you know, the more it helps you. ज्ञान की कोई कमी नहीं है. चले आगे, ठीक है. ये एक और हुआ, क्योंकि ये सब आई थिंक even when I teach 11th and 12th grade ना, ये सब में cloudiness many children have. What is an element, what is a compound, they are unable to say. अच्छा आगे चलते हैं. Before going to all those laws and all, वो तो किताबी ज्ञान है. चलिए, we go back to grade 9 now. Grade 9 chapter number 2 is matter around us pure. वहां से एक और चीज देखते हैं. ये है हमारे पास matter. This is matter. सर क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट केक है. मैटर दुनिया में दो ग्रुप में स्पेसिफाई होता है. प्योर substances, pardon my English, and impure substances, because I remember my sir, we had a sir, and sir used to define what is resistance. He used to say, write down the note, resistance is the property of a substance. And I also say, sir, is the property of a substance. आगे बड़ी मार मारेंगे, तुम समझ रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है. He used to say, by which it opposes the flow of electrons. Substance सर ही नाम हो गया, but I still talk to him. Resistance is the property of a substance. And it was so funny, the other day I was speaking with him, I spoke about some ex-vice principal of ours. I said, sir, वो सर कहाँ है अभी? बेटा वो तो ऑफ हो गए, आज 4 साल हो गए. ऑफ मतलब इज पास्ट अवे. उन्हें ऑफ हुए तो 4 साल हो गया है. ऑफ, ठीक है. प्योर सब्सटेंसेस एंड impure substances, ठीक है. Now pure substances कौन से होते हैं? Those, इससे देखो आपका chapter 2 chapter 4 सब क्लियर होता है. Those which have only one kind of particle. ये वो सब्सटेंस है जिनके पास सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल है. अब सवाल आता है, सर ये पार्टिकल वा कहाँ है? ये पार्टिकल या तो एटम हो सकता है या तो मॉलिक्यूल हो सकता है. बात समझ में आ रहा है आपको? देखो कितना क्लियर, आपको यहीं से सब क्लियर होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, यहीं से आपको सब क्लियर होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, हाँ चलिए. सो इट्स लाइक वो पार्टिकल कैन आइदर बी एन एटम और अ मॉलिक्यूल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो अ प्योर सब्सटेंस वुड बी समथिंग लाइक दिस. A pure substance is, there are two options available with me. Sir, this is a pure substance which is having either A as the atoms, or this is another pure substance. कॉन्सेप्ट क्लियर करो. ये भी एक प्योर सब्सटेंस हो सकता है. सर इसके अंदर ना हमें सिर्फ M ऐसे मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं. सर हमने एक थर्ड टाइप का भी सब्सटेंस देखा है रत्नदीप के पीछे वाले वॉल में. अच्छा कैसा चीज है बताओ? सर उसमें ना हमको ऐसा एक ए दिखा, हमको ऐसा एक ए दिखा, और उसमें हमें ऐसा एक एम दिखा, और वी सॉ अनदर एम लाइक दिस. ये क्या है बेटा? आप भेलपुरी देख के आए हैं, मिक्सचर. क्योंकि इसमें ये प्योर नहीं है. फर्स्ट थिंग ये इम्प्योर है, क्योंकि प्योर्स डेफिनेशन इज व्हाट व्हिच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल. समझ में आ रहा है? तो सवाल आता है, सर दैट मींस जब हम प्योर की बात करते हैं, दे कैन बी समवन हु इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एटम, वन काइंड ऑफ एटम, और वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल. दैट मींस ऐसा भी कोई सब्सटेंस है जो दोनों तरह से भी रिप्रेजेंट हो सकता है. एलिमेंट अभी अभी हमने देखा, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है ना. ऑक्सीजन हम O रूप में भी देख सकते हैं, O2 में भी देख सकते हैं. दैट मीन्स सारे एलिमेंट हो गए क्या? प्योर सब्सटेंस. क्लियर? और उसी तरह सर हमने अभी अभी एक चीज देखा, H2SO4 देखा ना. हमने देखा CO2. व्हाट इज CO2? कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट इज CuSO4? कॉपर सल्फेट. लिखते जाइए, ये सब नई चीज है. कॉपर सल्फेट. हमने देखा एक चीज सर, समथिंग लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO.
ये सारे चीजें are represented by molecules. And when we did their structural analysis, we found that they all fitted with this pattern. They all fitted with this pattern. Means किसी में M1 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 ही मिल रहा है, किसी में M2 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 ही मिल रहा है, किसी में M3 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 मिल रहा है, लेकिन दूसरा कुछ नहीं मिलेगा. Nothing else. That means these are all compounds. Do you understand? So all compounds are also pure substances. समझ में आया? An atom is a pure, an element is a pure substance which contains one type of particle. That one type of particle can be either atom or molecule. Suppose if you take oxygen को इस रूप में देख सकते हो आप, O2 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 O2. You are only seeing O2 molecules. You got copper, then you are seeing only copper, 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 copper atoms. And you can also have something called a compound in which you see only one type of particle, CO2, 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 CO2. बीच में लेकिन एक मैग्नीशियम मत घुसा दीजिए, घुसने से ही वो हल्दीराम नवरत्न मिक्स है ना. क्लियर हुआ? मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, बहुत अच्छी बात है. कंपाउंड जो होता है ना, वो एक देश समझ लो, देश. उस देश को रिप्रेजेंट करने के लिए यूएन में एक रिप्रेजेंटेटिव जाना पड़ेगा. और हम यूएन में कितने लोग, अभी आपको इंडिया के लिए 5 सोफा थोड़ी लगा के देगा, एक ही चेयर देगा. No sir, we are a nation which is the highest populated country, sir. We need at least 3 sofas. Chup. One seat will be given. Smallest identity through which the country can be represented is known as a delegate. The smallest representative through which a compound can be represented is a molecule. तो ये जो H2SO4 है ना, ऐसा तुम बोतल में भी H2SO4 ला सकते हो, पर उससे निकल के एक मॉलिक्यूल जाता है. We are from H2SO4 community. उसको मॉलिक्यूल कहते हैं. अब वो जो मॉलिक्यूल है वो कंपाउंड कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है. उसके पास में एक और आदमी बैठा है. आप कहां से हैं? जी मैं H2SO4 से हूं. अच्छा, आप कंपाउंड से आए हैं. आप, मैं O2 हूं. वो आप एलिमेंट से आए. समझ रहे हो? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टाइप कौन से है? सिविक्स में पढ़े हो ना. स्टेट मतलब राज्य, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश. हिंदी भी इंप्रूव होना चाहिए. माय इंग्लिश इज बैड यू नो. ठीक है, समझ में आया? क्लियर? एनी क्वेश्चन टिल नाउ ऑन एलिमेंट कंपाउंड? ये सब लेकिन क्लास 12 तक क्लियर होना चाहिए. यहां पढ़ो, जहां पर जिधर भी पढ़ो, गधों की तरह आंसर मत देना बाहर में जाके, सर आई डोंट नो. क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स. कैन a mixture ever have a chemical formula? No, no, because chemical formula is attributed only to a molecule. मिक्सचर को कैसे हम केमिकल फॉर्मूला देंगे? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है. मिक्सचर्स डोंट हैव केमिकल फॉर्मूला. वो आपको पता ही नहीं उसमें क्या क्या है, मॉलिक्यूल ही नहीं है वो. बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके हुआ है, अब हमें कैसे पता? मिक्सचर्स डोंट हैव. देयरफॉर you are going to study in this chapter something called symbols which are restricted to atoms, and you are going to study something called chemical formula which are restricted to molecules. ठीक है, ब्रीफ आते जाएंगे, लॉस तो पढ़ते जाएंगे. अब सवाल आता है सर, ये जो ऑक्सीजन आपने देखा, this oxygen you said in the UN assembly it goes as O, in our nose it is going as O2, in the atmosphere and outer atmosphere it is at O3, and then we have something called carbon dioxide. You know, carbon dioxide, I saw carbon dioxide walking alone. So carbon dioxide is CO2, right? So question comes, ये सब क्या था बेटा? ये सब एलिमेंट था. These all are element. ये क्या है? कंपाउंड है. तो जाहिर सी बात है, अगर ये कंपाउंड है तो ऑल कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूल्स. Whereas this one was atom, this one is molecule, and this one is molecule. Have you understood? Question now arises, which all are chemical formulas and which are symbol? A symbol will have only alpha representation, 2 letters maximum, first one being capital, second one being small, Mr. Mr. A chemical formula is like a recipe. Chini 2 chammach. It will have a representation along with a numeric count, alphanumeric. Numeric tells you in what proportion the alpha is present.
न्यूमेरिक टेल्स यू इन व्हाट प्रोपोर्शन द अल्फा इज प्रेजेंट। सी पे कुछ नहीं, मतलब 1, मतलब एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनने में क्या क्या है, कार्बन 1 चम्मच, ऑक्सीजन 2 चम्मच है, 2 atoms. Again, remember, be very clear what you're saying. One molecule of carbon dioxide contains 1 atom of carbon and 2 atoms of oxygen chemically combined together. You can see, but you cannot separate. Chemically combined. And a chemical combination is a chemical change, a process in which new substances with new properties are formed. That is the definition of a chemical change. And a chemical change is represented by a chemical reaction. That's your first chapter in grade 10. So what is a chemical reaction? Whenever a new substance is formed with new properties, एकदम new property होगा, हाइड्रोजन भस्मासुर, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबस्शन, दोनों का बच्चा वाटर आग को बुझाता है, नया प्रॉपर्टी, न्यू सब्सटेंस with new properties should be formed. Always remember that. New substance, new property. And hydrogen is a gas, oxygen is a gas, water is what? Sir, liquid. Totally new properties. Okay. So ये हमारा, now question arises, which all are chemical formulas and which all are symbol? So first thing, always remember, symbol is always attributed to atom. Don't say symbol is attributed to element, क्योंकि ये भी element ही है. Symbol is attributed to the atom of an element. इसका मतलब, what is the color selected? Oh, green. Very good. This is symbol. But what about this? This is chemical formula. ऐसा क्यों सर? अरे ये अल्फा है, उसके साथ एक न्यूमेरिक भी है. अल्फा न्यूमेरिक जब हो जाएगा ये केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा. ये क्या बता रहा है? इस मॉलिक्यूल में 2 चम्मच ऑक्सीजन है, इसमें 3 चम्मच. Are we clear? So if somebody tells you that sir, there is something called N. N means nitrogen, and N2. N and N2. Now my question to you all. Whoever wants to answer can answer. The question is, puke everything that you know when N and N2 are written. And if I feel that you have puked less, I'll ask somebody to puke the remaining, or else I will puke. N और N2 को देख के आप क्या समझते हैं? एक एक करके आप पहले बोलिए. एक ही बोलना, ज्यादा सब लोग बोलेंगे तो समझ में आया. Both are elements. आपको क्या लगता है N और N2? One is a symbol, one is a chemical formula. Very good. और क्या क्या है बोलते जाइए. अभी तक दोनों ही करेक्ट है, लेकिन ऑर्डर में नहीं जा रहा है. मतलब कैसा है, आपके रेस्टोरेंट में क्या क्या है? मीठा पान है. आदमी पहले पान खाएगा क्या? सौंफ है विथ मिश्री. ठीक है, पर करेक्ट है. एक ही चीज बनाना है. और बोलिए. यू टेल. थिंक. नहीं है तो कोई बात नहीं. अच्छा, ही वांट्स टू से नो, एटॉमिक मास तक तो हम गए नहीं. मोर. और क्या क्या है? और भी है. समथिंग यू ऑल हैव मिस्ड आउट. बोथ आर प्योर सब्सटेंसेस. देखो, मेन चीज छोड़ दिया. इसको कैसे बताना चाहिए? N and N2 represents the element nitrogen, whereas N represents an atom of nitrogen, N2 represents a molecule of nitrogen. The nitrogen that we see in the atmosphere, imagine you're teaching a small kid, he has to relate. Then the nitrogen that you see in the atmosphere is, or you feel in the atmosphere is N2, not N. N is a symbol, N2 is a chemical formula. N is the atomic form of nitrogen, N2 is the molecular form of nitrogen. Both are representing elements and both are pure substances. Pure substances क्या होता है भैया? तो आप बोलोगे प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें एक टाइप का पार्टिकल हो. इसमें सिर्फ N दिखेगा, नाइट्रोजन एटम्स. इसमें क्या दिखेगा? N2, 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 N2. Its last representing identity will be N2 and its last representing identity is N. Clear? Very good. अच्छा, वैसे ही सवाल एक और. बकिए, what all you can bakufy on these impressions that I have made on the board. Yes.
O stands for what? Olga, she's a lady from Russia, you mean to say? When it's a two different matter, while O represents the element oxygen. H represents the element hydrogen, whereas H2O represents the compound water, also known as dihydrogen oxide. Water तो आपने नाम दिया है, उसका actual नाम है dihydrogen oxide. हाँ, oh yes, hydrogen oxide. Main नाम से कोई जानता ही नहीं है, dihydrogen oxide ना. So water is dihydrogen oxide. So we'd say while O represents an element of oxygen, H represents O represents an atom of oxygen, H represents an atom of the element hydrogen. This one represents one molecule of the compound water. All of them are pure substances. This is formed by the chemical combination of ONH, right? Which is a irreversible, normally irreversible by usual method. और chemical change में क्या होता है? Chemical change में new substance with new properties, there will be always exchange in the form of heat, light or sound, and then usually irreversible by normal process of applying heat, current and usually heating, boiling करके आप इसको reverse नहीं कर सकते हैं, ठीक है? Then further we say that to form this one molecule of water, it requires two atoms of hydrogen and one atom of oxygen chemically combined together, ठीक है? अब ये वाटर जो है इसको हमने लाया, कहां से लाया? इसको हमने लाया तेलंगाना से. तेलंगाना में कहां से? हैदराबाद से सर, ठीक है? और हमने एक और H2O लाया, ठीक है? और ये H2O को कहां से लाया? सर सैन फ्रांसिस्को से लाया, है ना? क्या दोनों में कोई फर्क है? No. It's just like the McDonald's burger, whether you have it here or you have it in Delhi or even there. The taste is recipe based. Yes, very nice. It's recipe based. I like this. It's recipe based. Recipe based means Tom cooks it, somebody else cooks it, it's going to be the same. Do you think that all the people who are employed in McDonald's, they know how to cook this thing? They just follow temperature 20 degree, put those frozen item, और बस वो 20 डिग्री के बाद ऐसा आएगा. अगर नहीं आया तो आपके फर्नेस में कुछ गड़बड़ी है. That's the only thing. Now यहां से ही आप सीख जाओगे क्या? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है? सो एज लॉन्ग एज यू आर अ प्योर सब्सटेंस, एज लॉन्ग एज यू आर वाटर, आपको आंख बंद करके ये पिलाने से भी कोई टेस्ट नहीं महसूस होगा, इसमें भी कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा. दे आर द सेम, दे आर सेम. Or whether if you have tomorrow said that sir in Mars also there is some water vapor which I trapped and brought and I condensed it and I changed it into water and it's pure water, तो भी वो water same होगा. तो इसमें क्या जाता है? ये लॉ बाद में देखेंगे, रट के क्या फायदा है, वो यही बताता है. बट टेस्ट सेम आ रहा है का मतलब क्या है? द बर्गर, द मेयो, द चीज एंड द पैटी should be all of that same identical whichever McDonald's you are going. That's why when you eat it तुम बोलते क्या? ये बैंगलोर का वो मॉल का है, this is पंजागुट्टा मॉल, this is our घर के पास वाला. No, nothing like that. So a pure substance, usually a chemical compound, consists of the same elements which are combined together in a definite proportion by mass, irrespective of where you are sourcing it from or how you are sourcing it off. सर हमने वरुण देवता के बारिश को कंडेंस करके उसके बाद पानी बनाया, प्योर है क्या? प्योर है सर. तेरा भी H2O ही है. सर मैंने नाले के पानी को फिल्टर करके और बहुत फिल्टर करके प्योर फॉर्म ऑफ वाटर लाया हूं आपके लिए, H2O ही है. Sir, we got from Mars, H2O here. It's all about like time, you know. Whether you see it on a Rolex, or you see it on a सिकंदराबाद फुट पर मैं 25 के 10 ऐसे घड़ी बेचता है ना, थोड़ा टाइम ही बताएगा आप. Whether you sit in the business class or in the economy, as long as the flight doesn't crash, all of you are going to land in the same airport and get out of your luggage from the same thing. So it's not just similarly like that. So a pure substance, but it's just pure substance. You can't even be specific because it's not talking about element. So rather we say a chemical compound consists of the same elements combined together, chemically combined together in a fixed proportion by weight or by mass, irrespective of how or where, how the substance has been obtained or from where the substance has been sourced, as long as it's pure. And one thing which is I'm saying beyond your syllabus, अगर आप pure हो, ठीक है? If you are a pure substance, तो प्योर सब्सटेंस की एक खासियत होती है, a pure substance always has a fixed MP and a BP. भारत पेट्रोलियम, मध्य प्रदेश नहीं सर, melting point and boiling point.
Water will boil at what? 100 degrees Celsius, provided the pressure is 1 atmosphere. Melting point, these all you'll learn in higher grades. Melting point, when you specify, you have to specify what pressure. Obviously, people who are accustomed to eating, say, mutton and other things, तुम कढ़ाई में बनाओगे तो कितना टाइम लगेगा? प्रेशर कुकर में बना देते हो तो मटन जल्दी बन जाता है. So you are changing the boiling point of mutton. How? By applying pressure. So if the pressure changes, the melting and boiling point will change. Are you getting it? So whenever we say melting and boiling point, I didn't tell all these things in the first part. Now I am saying because now you're at an advanced stage. For me, you're no more grade 9 students. You're just waiting at the boarding gate of grade 10. So your substance will always have definite. So in sometimes in Cambridge and all, they ask you, how would you prove that this is water? Just 1 minute, then I'm coming back. How do you prove this is water? Boil it. Boil it without any, the way it came, at the same atmospheric pressure right now, that is 1 atmosphere, it has to boil at 100 degree. Every time it will boil at 100 degree. Sir, actually, you know, I took 2 drums of pure water. अब भी वो 100 डिग्री पे बॉईल करेगा, टाइम ज्यादा लगेगा. इत्तुसा पानी भी बॉईल होता है 100 डिग्री पे ही वाटर बॉईल होगा. या योर क्वेश्चन. Sir, impurities also change the Impurities, so then we will never say it has a fixed boiling point. You are in which tower? See, you are getting water from C's tank. So maybe in your tank 2 rats and 1 lizard has died. In my tank maybe 1 kitten has also died. So all these are impure. No, these are all present. Na? Bacteria are there. कभी अपना tank खोला है ऊपर जाके, you are not allowed. But the day you see the tank, you will never drink. That morning when you open the, what do you call, wash basin and you do Ajanta toothbrush, papa ka, mama ka, you do that. Na? You'll never do that. The reason is you will straight away go and ask, aquaguard से पानी लेके करोगे. So there is impurity in your tank, there is impurity. You bring the 2 waters, let's have the same gas source. They will not boil together. नहीं boil होगा. Milk as you buy from the milk packet, and if somebody, So will it take longer? yeah, any solute when added in a solvent, the boiling, this is what you study as colligative property in grade 11. When you add any sort of solutes, the boiling point will go up. So what about like freezing? Will it फ्रीजिंग पॉइंट भी और टाइम लगेगा. फ्रीज होने में टाइम लगेगा. Like if you add salt to water, the water will take time to boil. ज्यादा टाइम लगेगा boil होने में. Clear? इतना तक. So I believe after this you guys should not have any sort of confusion. आगे जो पढ़ेंगे सब आसान लगता रहेगा, because we're gonna cover, we'll go NCERT book wise, we will go, and from next chemistry or physics class, children, I'm a little bit poor, I don't have a NCERT book. One of you at least bring one NCERT science book whenever we are studying physics or chemistry. Okay, so is this entire, यहाँ अब किसी को भी कोई सवाल पूछना है, कोई खांसी है तो खांस डालो. Anything that you feel that in atom or molecule we are not understanding, or anything that you are not. So when you are talking about all these reactions and all, now start asking yourself, you're dealing with only pure substances, pure substances. By the way, the glass of milk that your mother gives you every day is impure in terms of chemistry. And potassium cyanide served to you as a poison is very pure, because potassium cyanide is KCN. It contains 1 molecule of potassium and 1 carbon and 1 nitrogen chemically combined together and to form a pure substance called potassium cyanide. Milk is impure because milk is a mixture of many things. Irony of chemistry. चलें आगे. Yes sir. हाँ ठीक है. वो उसको प्रे दिखा ना वहाँ पे. Oh my God. Survival of the fittest. अभी उसका पंख पकड़ लिया है. That's the ill fate of the butterfly. It should have by now gone away. Yeah, I can't help it. Okay. Have you understood? Yes. ठीक है. आइए. ये देख लिया. Okay. So we now go to the first topic of the chapter. Okay, something more before I start the chapter on its own. See, I'm not going by the order of the chapter in the book. The reason is because I believe there are some things you should know properly. Okay, now I'm again going to an atom. ये बार बार ping क्यों होता है? Okay, I'm going to an atom. Atom. Now this is an atom, and now I'm going inside the atom. Okay.
I'm thinking from the next chapter as if we know the next chapter also. So ये atom के अंदर क्या हो जाएगा बेटा? Atom के अंदर हमारे पास क्या रहता है? We will have one something called nucleus, okay, which is the central core, है ना? और हमारे पास रहेंगे at this level of grade 9 we know orbits. ठीक है, देखने में कुछ ऐसा लगेगा, ऐसे ऐसे ऑर्बिट्स रहेंगे, ऐसे ऐसे ऑर्बिट्स रहेंगे, ऐसा है, ठीक है। ये सेंट्रल कोर के अंदर दो प्रजाति के लोग रहते हैं। What all? We call them nucleons, and the nucleons are protons and neutrons. Basics. प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये होते हैं इलेक्ट्रिकली neutral. And if you talk about the mass, then the mass of a proton is almost same as the mass of a neutron. Almost same. Okay? दोनों का मास एकदम सेम होता है. This is little bit higher level पर जान के रखो. ठीक है. अब जरा एटम की दुनिया को देखो. This is atom. ये है एटम का न्यूक्लियस. इसके अंदर प्रोटॉन्स भरे पड़े हुए हैं और न्यूट्रॉन्स भरे पड़े हुए हैं. different count. Okay. And this atom has got orbits like this. ऐसे orbit है. And these are all, I can't draw 3D out here. So this is how orbits are. Orbits are in different axes aligned. But try to think it in this manner. Circle draw करके दिखाता हूँ आपको. ये एक orbit है, ये एक orbit है, और मान लीजिए there is one more orbit which is like this. इस orbit को हम क्या बोलते हैं? Outermost orbit. Very good. Outermost बोलते हैं या फिर बोलते हैं valence. Valence है, valence orbit जब भी है. Outermost. Okay. Now we said that atoms chemically combine, okay ना? तो इसको मान लो this is an atom A. Atom A और atom A का chemical combination होने वाला है एक और atom के साथ, और इसका valence है like this, right? This is atom B. Now whenever a chemical combination happens, this is for your understanding, whenever a chemical combination happens, मतलब element reacting with another element, now reaction happens at the atomic level and they are going to give birth to what? They are going to give birth to a compound now. ऐसे केस में ये जो protons and neutrons होते हैं ना, protons and neutrons, इनको हम बोलते हैं माँ का लाडला. ये लोग कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में ही स्टिफ रहते हैं. They don't play any role. इन्हें कुछ नहीं आता जाता है. They are like war हो रहा है दो कंट्री के बीच में, तो बॉर्डर में आर्म फोर्सेस के बीच में क्लैश हो रहा है. पहले भी ऐसे. तो ये लोग कौन है? They are like our local police station. ये अपने ट्रैफिक पुलिस है. ये थोड़ी जंग लड़ने जाते हैं, ये नहीं जाते हैं. ठीक है. अब यहाँ भी like there are different levels. First the border forces will go, and then border regiment अगर टूट गया किसी का, तो then this becomes exposed. So new core regiments will go. So how do we say that? We always say that it is the combination of valence electrons from atom B and valence electrons from atom A. यही तो आप next chapter में पढ़े हो. We learned about that and see that this is what is guiding about the valency. It is all a tough fight and everything which is happening only between the valence atoms and valence electrons of each atom. Please understand. Atoms itself do not change. Their electronic configuration gets rearranged. ऐसे भी आप देखो, पहले भी आप C और O थे. CO2 बनने में भी तो आप C और O ही हो, पर आपका combination change हो गया है. If you are able to absorb little bit, so we can show you like this. Like when you form CO2, then obviously oxygen and oxygen get bonded together, and carbon and oxygen are also getting bonded together. So that's how we form CO2. एक carbon has got 4 valencies. So in this 4 valencies, each carbon is getting touch with, oxygen atoms on either side. Now the question arises is, the atoms do not change. Rearrangement of electrons takes place and the atoms get rearranged in a manner in which they can get stability. ठीक है? So whenever you are forming a compound, जब आप atom से molecule बनते हैं, तो atom से molecule बनने में only valence electrons are taking part. No other people are taking part in this. The atom itself does not break or go away. ठीक है? This gives us, okay, so as we said, atom, these things we should know. Atom has got a nucleus, atom has got orbits, और यहाँ पे एक central core होता है, nucleons are protons and electrons, and in this orbits, these are our objects of interest. Electrons.
इसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं. So electrons are further, if you go in higher classes, they will be classified as bonded electrons and valence electrons. Bound rather we say, not bonded. Bound means the inner electrons. Valence means the outer. अपने लिए यही interest का है. They are going to guide all the chemical properties because everything depends upon your stability. All are in the mad race of becoming 8. So if it has got 3, it will like to lose 3. If it has got 6, it will like to gain 2. ये चोर बनेगा कि दानवीर कर्ण बनेगा. All valence electrons are going to tell. Are we clear on this part? Yes, sir. हाँ. Valence electron moves around both the nucleus. Both the nucleus. O2 कुछ ऐसा है, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन एटम है ना, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस. आ जाओ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ. ऑक्सीजन इज हाउ मच? O is atomic number कितना है? 8. 8 means 2 and 6. 2 and 6, right? So we will only see the valence shell here. How many electrons in this oxygen? 1 electron, 2 electron, 3 electron, और से ऐसे दिखा देते हैं. हाँ, 2 6. No, I'm seeing only the outermost shell. वो जो 6 है ना, we're trying to see that 6. So 1 2 3 4 say 5 and 6. These are the 6 electrons outermost shell. Similarly, और एक ऑक्सीजन में भी कितना रहेगा पता नहीं, आज फिर बीमारी शुरू हो गई. So it will also have 1 2 3 4 5 6. So what they do, there is a sharing that happens between these electron. ये share हो गया. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6. Just count 1 2 3 4 5 6 7 हो गया अभी. इसका कितना है? 1 2 3 4 5 6 7. एक और चाहिए. Therefore oxygen molecule is double bond. ऐसे हम लिखा. अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. There was an element you showed where, like, instead of O2, he wrote it as COO. That is, those are organic compounds. Why can't you write it as CO2H? CO2 organic compounds में structure plays role. When you study organic chemistry, molecular formula does not have any significance. Structure has more significance. That's a different branch of chemistry. That's why studied separately. ठीक है? ये हो गया. आइए अब हम इतना ज्ञान के साथ we are sufficient enough to go to the first law. एक लॉ तो सीख लेते हैं कम से कम, बेकार के बहुत सारे डिस्कशंस हो गए, फालतू दिया गल्ला. आ जाओ. लॉ ऑफ conservation of mass. And I'm saying whatever we are studying today, even go back home, take the way to study right now is very simple. First take your NCERT and see the topic and take Lakshmi Singh. Lakshmi Singh में ज़्यादा रहेगा. NCERT topics stick in Lakshmi Singh and study those. Don't try to study extra. Devote that time for your social studies. Is that extra enough? I am speaking. Devote your time for social studies and your language. Or another way can be you first read it first in NCERT and then you go and read in Lakshmi Singh. Because why Lakshmi Singh is good? The way it gives definitions and all are much better. Bold में रहता है. जो book मैंने आपको दिया है ना, that book has got more, the definitions are much more better. So do not try to read the entire Lakshmi Singh. They open your NCERT and see what are the headings of this chapter. It will be written chemical combination laws. बस इसको हटाओ, यहाँ से पढ़ो chemical combination. उसके बाद वहाँ बहुत सारा एग्जाम, उतना जाना जरूरी. Understand at what depth you should go at every level. ठीक है? So law of conservation of mass. Law of conservation of mass was stated by Antonin Lavoisier. Okay, what does law of conservation of mass say? Simple, that mass always remains constant. Mass always remains constant. Law of conservation of mass says that suppose you are having a chemical reaction. What all things are there in a chemical reaction? You have reactants. Reactants undergo a chemical reaction. A reaction to give you what? Products. Law of conservation of mass कहता है कि ये जो मैंने लिखा ना, this is like a तराजू, and the mass balance should be maintained. Mass balance should be maintained. ठीक है ना? Mass balance कैसे रहता है? That means it says that the mass of the reactants must be equal to the mass of the products.
पूरे अर्जेंटम टावर को अगर हम तोड़ दें तो अर्जेंटम का वजन तोड़ने से पहले अगर 10 किलो है, then after breaking all dust, bricks, nails, last bolt, including somebody's shoe found, सबको वजन करने से भी 10 किलो ही आना चाहिए, because it cannot be stood. This law was given much before. ये तो एंटोनाइन लेवॉइसर मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले. Lavoisier's gala was cutified in French Revolution, you know ना? He was guillotined. So because Lavoisier was a good scientist, but बहुत सारा पैसा का घपला किया था. So when the French Revolution happened, and after that he was found guilty of money laundering. So before Louis XVI, he was also put into. And do you know who introduced guillotine as a capital punishment? No, who approved it was Louis XVI only. He was the person who approved it, and he also got. Okay, so Antonin Lavoisier actually said in those days nuclear reactions were not known. Nuclear reactions do not follow this law. Nuclear reactions में law कैसा रहता है? Mass of the reactant is equal to mass of the product plus the energy component. You will not find the product same. What happens in nuclear reactions? You will always find that this mass is much more than this mass. So something should be a balancing figure out here. What is that balancing figure? Energy. Nuclear reactions, that's why nowadays this law has been transformed. We say the total of mass and energy of a reaction system is always constant. Mass and energy of reactant should be equal to the sum of mass and energy. But since we are studying it at a level where we are studying only for law of conservation of mass, the law of conservation of mass says that the total mass during a chemical reaction is always conserved. Chemical reaction means what? Whenever pure substances are being formed. A chemical reaction cannot be with impure substances, yes or no? A chemical reaction is always with pure substances, right? So you may say, नहीं sir, उस ointment को उस ointment में mix किया तो भी तो reaction हुआ. Yes, no mixture, but in there also some chemical, some pure substance in that mixture reacted with some pure substance there. So whenever you are talking about a chemical reaction, you are only dealing with pure substances. So it can be two compounds on this side and 2 or 3 compounds on this side, or chemical. So we say that the total mass of a chemical combination process involving a pure substance will always be constant. Mass of the reactant should be equal to mass of the product. Based on this, some numericals will come, which we will do. ये समझ में आया? And law of another law, then what is the next law? Law of constant proportion, given by Joseph Proust. Whereas NCERT will say Lavoisier gave both laws. Lavoisier and Proust conducted a lot of experiments, and this and this. But the right way is, this is given by Antonin, A-N-T-O-N-I-N-E, Antonin Lavoisier. ठीक है? शिवनारायण मत बना देना. Law of constant proportion. 11 में जाके आप पढ़ेंगे law of multiple proportion, constant proportion. Law of constant proportion says that a chemical compound always consists of the same elements chemically combined by the same mass, chemically combined in the same proportion by mass, irrespective of how the compound was formed or from where the compound has been sourced, as long as the compound is a pure substance. So pure substance, a chemical compound or bracket में लिख दीजिए pure substance always comprises of the same elements, again bracket pure substances, chemically combined together in a definite proportion by weight. ये दो लॉ के ऊपर हमारे पास आएंगे कुछ गणित, मतलब some mathematics, which we will do not on the first one भी आ सकता है, on the second one भी आ सकता है आपको. Show that this experimental data supports the law of conservation of mass. So all you have to show that LHS mass should be equal to RHS mass. But question comes is, you only have 22 marks in chemistry ना, कितना problem दे देगा आपको. So be very very good with assertion reasoning and question like there's law of conservation of there's law of conservation constant proportion. Explain the law of conservation of mass. आप बोलो. It does. दोनों law एक दूसरे को. The answer is false. They told like the assertion is true but reason is not. नहीं, वो पढ़ना पड़ेगा पूरा चीज, लेकिन ये और ये इंटरलिंक्ड है दोनों. Because what it is trying to say, just try to place your law. Law of constant proportion says
what is say burger from McDonald A, McDonald B, McDonald C will always have the same proportion. Yes. सेम प्रोपोर्शन आने के लिए इस साइड में भी तो वही लेना पड़ेगा ना. यहाँ के केक में अगर 2 चीनी का चम्मच का मिठास है तो इधर 4 चीनी का चम्मच थोड़ी लोगे तुम. Yes. Anything, see the law of conservation of mass is a BAP law. It is the dad of all. Whether you are showing a reaction which shows law of constant proportion, there also reactants should be equal to product. You go to grade 11, you're showing a law of multiple proportion. There also reactant mass should be equal to product mass, unless and until you are trying to show something which is a nuclear reaction. और न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा क्यों होता है ये भी आपको पूछना चाहिए. ये सारे रिएक्शन में नो एनर्जी छोड़ो, पूरा सुनो. ऑल दीज रिएक्शंस में मैंने क्या बोला था? द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गोज फॉर फाइटिंग. दैट इज ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन दैट फाइट और द रिएक्शन. एटम्स डू नॉट चेंज. न्यूक्लियर रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन व्हिच द न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म्स. कल तक मैं था जयदीप दास, इस रिएक्शन के बाद मैं बन गया अरब. चेंज समझ में आ रहा है? केमिकल रिएक्शन में कैसा होता है? मैं जयदीप दास था ना, कल तक ऐसे चलता था, अभी मैं ऐसे रह रहा हूं, पर अभी भी मैं जयदीप दास ही, मैं चेंज नहीं हुआ हूं. बट इन न्यूक्लियर रिएक्शन में अचानक इसका रूप धारण, द एंटायर न्यूक्लियस गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड. इट्स ए एलिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन दैट विल टेक प्लेस. देयरफॉर लॉ ऑफ ये दिस इज वर्किंग ऑन व्हाट बेसिस? total of atomic mass of this should be equal to total of atomic mass of this. जरा कॉमन सेंस लगाओ. ये जो लॉ है ये कैसे काम करता है? आप इस साइड में एटॉमिक मास लोगे और इस साइड का एटॉमिक मास लोगे. अरे ससुरा, जब एटम में चेंज हो गया तो एटॉमिक मास कैसे मिलेगा? दिस साइड यू आर मेजरिंग एटम्स. व्हाट? ब्लैक फॉरेस्ट केक. दिस साइड आल्सो एटम्स ऑफ ब्लैक फॉरेस्ट केक. इधर तो केक ट्रांसफॉर्म होके हो गया है क्या? चिकन पैटीज. तो कैसे इसका मास उसका मास बराबर आएगा? आएगा ही नहीं ना न्यूक्लियर रिएक्शन में. ऐसे जब आप पढ़ते हो ना, पूरे चीज को सोचो, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है. एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, प्लीज डेवलप 1 or 2 मुर्गीज. मुर्गीज आर योर बेस्ट फ्रेंड इन द स्कूल. और फिर अपना ज्ञान उस मुर्गी को दो स्कूल में जाके, उसको समझाओ योर बेस्ट फ्रेंड. इन दैट यू ऑल्सो शार्पन योर बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो बेनिफिट्स. समटाइम्स योर बेस्ट फ्रेंड में से बोर मत करो मुझे तुम, और ये भी बोल सकता है. और किसी को सिखाओ, लेकिन ज्यादा भी मत पढ़ो. बुक का चीज भी पढ़ना है. ठीक है, ये तो हो गए हमारे पास. Symbols also more or less we have said covered. Something that I didn't cover was who proposed the methodology of adopting symbols for atom? Berzelius. हाँ, मॉडर्न सिंबल. मॉडर्न सिंबल ही होता है ना. अभी आप थोड़ी केले के पत्ते पहन के घूम रहे हो, आप भी तो कार्गो पैंट पहन के घूम रहे हो ना. मॉडर्न ड्रेसिंग वो किसने बनाया? सर जारा और ये सब ने बनाया. आप थोड़ी बोलोगे सर आदि मानव ने बनाया था. वो थोड़ी आप पहनते हो, केले के पत्ते पहन के घूम रहे हो. सो Berzelius is the man who is attributed for, he said what? That symbol should be maximum of 2 letters. उसको जान के रखिए. First letter is in upper case, second letter is in lower case. If the first letter से कोई element already discovered है, उसके बाद suppose we have Siddharth. After Siddharth we got Shalini. So Shalini cannot be same as Siddharth. So दोनों को S नहीं, we'll make S and small h, है ना. और उसके बाद शालिनी के बाद और एक कोई S वाला मिल गया, समर्थ. तो उसको कैसे करना है? वो नहीं, उसका नेक्स्ट वाला वो SH है, वो SA हो जाएगा. Yes. और अगर वहां SA वाले 2 मिल गए तो फिर समर्थ का हम लेंगे क्या? जन्म का, ऋषि का नाम क्या है? दैट इज लैटिन नेम. एंड वी विल से यू आर आइदर नाट्रियम, सोडियम, कैलियम, पोटेशियम, प्लम्बम, लेड, लाइक दैट एंड लाइक. इतना समझ में आया? तो आपने सिंबल भी सीख लिया, आपने केमिकल फॉर्मूला के बारे में भी सीख लिया. एंड व्हाट इज अ केमिकल फॉर्मूला? अ केमिकल फॉर्मूला इज यूज्ड टू डिनोट अ कंपाउंड. इट इज अ अल्फान्यूमेरिक कॉम्बिनेशन वेयर द नंबर्स रिप्रेजेंट द count of atoms present in that particular molecule. तो जाने से पहले, इससे पहले कि आप चले जाए, आइए इसे आंसर करते हैं. ये बला का नाम क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट. बहुत अच्छा. एल्यूमिनियम सल्फेट, नॉट ट्राइसल्फेट. सल्फेट. वी नेवर से ट्राइसल्फेट, डाइसल्फेट. सल्फेट. पहले वाले में ऑलवेज द फर्स्ट वन में डाई ट्राई आता है, सेकंड वाले एल्यूमिनियम सल्फेट. व्हाट इज एल्यूमिनियम सल्फेट? इसकी जरा बताइए, इसमें हिसाब किताब क्या है?
Aluminum sulfate means, is it a pure substance? Yes. That means it's a compound represented by a molecule. One molecule of aluminum sulfate contains 2 atoms of aluminum, 3 atoms of sulfur, 3 atoms of oxygen and 12 atoms of oxygen. ये जो 3 है ना, ये दादाजी की संपत्ति है, बड़े भाई को भी जाएगा, मंझले को भी जाएगा, इसको भी जाएगा, सबको जाता है. Actually, this is aluminum sulfate. Do you know something called फिटकरी, alum जिसको बोलते हैं, alum. It will be white crystal. गाँव में लोग शेविंग करने के बाद गाल में भी लगाते हैं, इसको एंटीसेप्टिक. हम लोग ऐसे लेके ओल्ड स्पाइस, द मार्क ऑफ मैन, वो सब नहीं, गांव में ऐसे फिटकरी लगाया जाता है एंड इट्स वेरी गुड. आपको कोई तरह इस एलम इज Al2SO4 होल 3 24H2O. ये बोला क्या है? दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जब भी कोई चीज क्रिस्टल बनता है तो उसके साथ रहता है वाटर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ऐसे को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, व्हेन इट गेट्स क्रिस्टलाइज्ड, it is bound by 24 molecules of water. What is dot? Dot means water of crystallization. Again, understand how I'm saying. One molecule of aluminum sulfate is actually bounded by how many water molecules? Into 24 water molecules. ऐसे salt को हम 10th में पढ़ेंगे as hydrated salt. हाइड्रेटेड मतलब कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड आफ्टर यू कम फ्रॉम जुम्बा क्लासेस, मतलब पानी को पियो. बहुत पानी पी लिया भाई साहब, 24 मॉलिक्यूल पी के बैठा है. और अगर इस ससुरे को निकाल दो यहां से, अब इस सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? वो भी एल्यूमिनियम सल्फेट ही था, अब इसको क्या बोलेंगे? Dehydrated. हाँ, यही तो हो गया ना. इंग्लिश इतना कचरा, मैं इंग्लिश है, इसको बोलते हैं एनहाइड्रस. डिहाइड्रेटेड सुनने में अच्छा नहीं लगता. एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मीन्स समथिंग दैट इज ड्राई, है ना. तुम अगर त्वचा का ख्याल नहीं रखोगे तो यहाँ पे खरोच के ड्राई लिख सकते हो. लगाइए नया वैसलिन इंटेंसिव केयर और बन जाइए हाइड्रेटेड. नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा? एनहाइड्रस. दिस इज एनहाइड्रस. दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट. और ऐसे जब लिखेंगे, ऐसे जब लिखेंगे तो ये क्या हो गया? एल्यूमिनियम सल्फेट क्रिस्टल. क्रिस्टल हाइड्रेटेड फॉर्म, हाइड्रेटेड फॉर्म. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. दिस इज हाइड्रेटेड फॉर्म. Aluminum sulfate crystal means hydrated form. Got it? Acha. And in grade 10 you will further learn salts, if they show color, like copper sulfate is absolutely coral blue in color. Color is shown when the salt is in crystal format. Matlab copper sulfate is not blue. Copper sulfate is as white as your copy. Copper sulfate crystal is blue. No, that does not have 24. That has 5H2O. That has got 5H2O. Rust is also a crystal. Rust में कितने हैं? Rust में लिखते हैं .XH2O. As much as you can think. पीयूषा के घर की खिड़कियां थोड़े रस्ट करते हैं तो शायद 1-2 है, इसका ज्यादा करता है तो 10. रस्ट में हम डालते हैं .XH2O, where X is left to your imagination, depending on the quality of rust that has formed. अभी टाइटैनिक जो नीचे गया है उसका रस्ट ही इतना बड़ा होकर बैठा हुआ है, उसमें बहुत सारे होंगे. So every colored salt has got water of hydration. And if you heat copper sulfate, it will turn white. What happened? All the water got evaporated. So the copper sulfate that you have is anhydrous. ठीक है, ये सब नॉलेज हमें 10 में जरूरत होगा. तो आज इतना तक हो गया इस चैप्टर में. आगे हम थोड़ा सा एटॉमिक मास पे ध्यान देंगे क्योंकि we did not talk much about atomic mass. H2, right? H2, yes. I have heard somewhere that H, like hydrogen plus hydrogen can